Okay, students. So this is lesson number 2 of economics. People as resource. People are the most important resource among all other resources. What are the other resources? Resources like land, natural resources, labor, labor, Physical capital, human capital. yes. So among all the natural resources, human resource is the most important, or you can say that human resource is at the center of any development. So today in this lesson, we are going to study in detail about the importance of human resource, how human resource can be made more and more important. Population is not always a liability, but if the population is given proper knowledge, training, education, etc., the same population becomes an asset. So it is not always a liability. So let us start this lesson. Read the first paragraph, one of you. The chapter People as Resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training, and medical care. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. Okay. Human capital is the stock of skill. Skill means various types of qualities and productive knowledge embodied in them. So human beings should be embodied with different types of skills, knowledge, training, etc. so that they can make more difference, more development in their surrounding. People as a resource. How? People becomes a resource when it is given education, training, medical care, etc. The total population of the country does not mean the human resource. Okay. We have to see what type of qualities are there. If the people are unhealthy, uneducated, they are liability. But if the people are having some education, training, skill, knowledge, and they can develop the natural resources into more useful goods, then they can be known as the human resource. Right? So what is essential for making the population as human resource? Education, training, and medical care. Medical care. Training. These are the basic Medical things. care. Education, training, and medical care. Health. To convert the population into human resource. Simply, population is not a human resource. When the population becomes human resource, when the population is provided with education, training, and medical care. That is, the people should be physically and mentally very fit to create any type of development on the land. Have you understood this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let us proceed. People as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of gross national product. Gross national product means GNP. So we have to answer this in a short answer question. Like other resources, population also is a resource, a human resource. This is the positive side of a large population. This is the positive side of a large population. That is often overlooked when we look only at the negative side. What are the negative side of the population? That we think population as a burden, as a liability. But Scarcity of food. but when the same population is provided with knowledge, skills, training, etc., the same population becomes an asset, not a liability. So we should not look at the negative side only.
We should not look at the negative side of the population only. We say that India has a very large population. We say that India has a very large population and it is a burden. It is a liability, but it is not a liability. If the same population is given education, all people are educated, all people are having certain skill, then the same population becomes an asset for the country, source of development for the country. Ma'am, like China. Yes, तो देखते हो ना कि इंडिया में भी अगर हम Japan. Japan is also a country of very dense population. Density of population in Japan is very high. It is a small land, but the population concentration is very high. But each and every person is contributing in the development of the nation. So the people of Japan are very well skilled, well trained, and they are they are contributing to the development in the economy of the nation. Okay, so we should not think population as a liability. But when population becomes a liability or burden, suppose the population, a large part of the youth population is having no education, no training, and they are unable to create any difference, any development in the society, then it is a liability. Okay, so what should we do? We should convert the whole population of our country into very useful population, very fruitful population. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. So there you can make a question, what is human capital formation? Just wait. Before this, we shall do some more questions. That adds to the productive power of the country, just like physical capital formation. Okay? Now you be ready with your economics notebook and pen to write some questions. Yes, ma'am. How you can say that people is a resource? People are a resource. How can you say that people are a resource? Start Yes, writing. ma'am. Yes, People are the resource for a country. People are the resource for a country. People are resource for a country when investment is made. When investment is made in them in the form of education, training, and medical care. And when the investment is made in the form of education, training, and medical care. Yes, And ma'am. thus, yes, ma'am. it is known as human capital or people as a resource. And thus it is known as human capital or people as a resource. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Add one more line. Human capital is the stock of skill and productive knowledge. Human capital is the stock of skill and productive knowledge
embodied in them. Embodied in them. Repeat. Human capital is the stock, S-T-O-C-K, stock of skill and productive knowledge embodied in them. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, Om Kumar, you read the answer? Yes, ma'am. You read the answer. People are the resource for the country when investment is made in them in the form of education, training, and medical care, and thus it is known as the human capital or people as a resource. Human capital is the stock of a skill and productive knowledge embodied in them. Right, next answer. What is the full form of GNP? Yeah, simply likho, what is GNP? What is GNP? Right, Yes, ma'am. Yes, right answer. GNP is gross national product. GNP is gross national product. Full stop. It is the value of final goods and services. It is the value of final goods and services produced by the Final goods. Yes, final goods and services produced by the residents produced by the residents, RESIDENTS, residents of the country anywhere in the world. Yes, ma'am. कहने का मतलब कि एक कंट्री के अंदर रहने वाले लोग जो हैं रेसिडेंट माने वहाँ कंट्री के अंदर रहने वाले लोग, तो एक कंट्री के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो फाइनली कितने वैल्यू का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं और उसी को उस टोटल वैल्यू को कहते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम एक बार आंसर रिपीट कर दीजिए ना. हाँ, तुम ही लोग करो, तुम में से कोई एक करो. GNP is the gross national product. It is the value of final goods and services produced by the resident of a country anywhere in the world. हाँ, ठीक है. कौन अभी रीडिंग किया? ओम. Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है. और एक और कौन सा बच्चा है? गौसम अग्रवाल. एक और बच्चे रीडिंग कर दो. GNP is gross national product. It is the value of final goods and services produced by the resident of the country anywhere in the world. हाँ, चलो, ठीक है. सबको समझ में आ गया? People as a resource हो गया. Yes, ma'am. ऐसा क्वेश्चन आता है कि what is human capital formation? ये लिखो. What is human capital formation? Yes, ma'am. क्या लिखोगे? आंसर यहाँ से ढूंढ के बताओ. यहाँ देखो. See these lines. When the human resource is When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. That adds to the productivity power of the country, just like physical capital formation. हाँ, यही लिखना है. यहाँ से लिखना शुरू करो तो. When the existing human resource, start writing all of you. When the existing human resource is developed by becoming, when the existing human resource is developed more by becoming more educated and healthy,
more educated and healthy, comma, we call it human capital formation. Human capital formation that adds to the productive power of the country. Productive power of the country, just like physical capital formation. Yes, ma'am. Okay, now come to the next paragraph. All of you read it. Aditya, Yes, ma'am. repeat the answer. When the existing human resources is developed by more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country. मतलब पीपल को अगर हम एजुकेटेड और हेल्दी रखते हैं, मेंटली फिजिकली बहुत फिट रखते हैं, तो वो क्या होगा कि कंट्री की प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी, ठीक है ना। इसीलिए ये जैसे हम लोग फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन तैयार करते हैं, वैसे ही ये क्या तैयार हुआ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मैम आदमी को हेल्दी रखने से तरक्की कैसे होगा? हाँ बिल्कुल जरूरी है ना। किसी कंट्री में अगर पॉपुलेशन का बहुत हिस्सा जो है, बहुत बड़ा हिस्सा अगर बीमार है, इल हेल्थ है, मेंटली वीक है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं बना सकता, है ना। उसको ह्यूमन कैपिटल वो कंट्री दिक्कत होगी। हाँ, और जितने एक्टिव वो कंट्री को कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएगा, कंट्रीब्यूट कर पाएगा। और जापान और चाइना, कोरिया, इसका नाम क्यों इतना आगे है, क्योंकि एक एक आदमी कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। अपने देश के इकोनॉमी में एक एक आदमी का कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए वो बहुत आगे है। अब इंडिया में वो दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, है ना। दुनिया में इतना बड़ा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और कहीं नहीं हो सकता है जितना कि इंडिया में किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग जरा ये देख लें नेक्स्ट पैराग्राफ, आ जाओ। Investment in human capital through education, training, medical care yields a return just like investment in physical capital. ठीक है ना। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझो कि अगर कोई फार्मर एग्रीकल्चर कर रहा है, तो एग्रीकल्चर में अगर वो बहुत अच्छे फर्टिलाइजर, गुड क्वालिटी सीड्स, इरिगेशन, ये सब जितना इन्वेस्टमेंट करता है, उसको उतना ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है कि नहीं। तो ठीक वैसे ही ह्यूमन बींग्स में भी जितना ज्यादा हम अच्छे से एजुकेट करें, उसको ट्रेनिंग दें, उसका मेडिकल केयर करें, तो उतना ही ज्यादा वो प्रोडक्टिव होता है, उतने ज्यादा कंट्री के लिए बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर ये सब बहुत ज़रूरी है। और बचपन से ही जब ह्यूमन बींग्स अपने चाइल्डहुड में होते हैं, तभी से उसमें ये इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, और तब जाके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated or better trained persons, as well as the higher productivity of healthier people. ठीक है ना। तो जितना ही हमारा पॉपुलेशन का जितना बड़ा हिस्सा हेल्दी होगा, एजुकेटेड होगा, उतना ही ज्यादा कंट्री का इकोनॉमिक बेनिफिट और डेवलपमेंट होगा। तो पॉपुलेशन को हम हमेशा एक लाइबिलिटी या बर्डन नहीं समझ सकते हैं, है ना। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन कितना स्किल्ड है ना, इस पॉपुलेशन में कितनी क्वालिटीज है, उस बात पे डिपेंड करता है। अगर फुल ऑफ क्वालिटीज है तो वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स। हाँ, एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है, वही एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है। देख रहे हो ना कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में किस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को 4 गुना बढ़ा दिया गया। जब इंडिपेंडेंस हुआ था 1955 तक में, 47 से लेके 1955 तक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत कम था। कितना था? अबाउट 50 मिलियन मेट्रिक टन्स था जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था एनुअली, वो इतना था। और अब बढ़ के कितना हो गया है? 255 से भी ऊपर पहुंच गया है, मतलब 4 फोल्ड से ज्यादा हुआ है।
बढ़ा है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो क्यों बढ़ा है? क्योंकि एग्रीकल्चर में हमने इतना इन्वेस्ट किया है, साइंटिफिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का हुआ है और इसलिए इतना ड्रामेटिक गुड रिजल्ट सामने आया है। ठीक है ना? तुम इमेजिन करो कि जहां सिर्फ 50 मिलियन मेट्रिक टन ग्रेन होते थे, वहां अब इजीली 265 मिलियन मेट्रिक टन, यही हर साल का डेटा होता है लगभग, मतलब 250 मिलियन मेट्रिक टन से ऊपर होता है इंडिया का एनुअली, सिर्फ फूड ग्रेन का प्रोडक्शन ये है ना? तो India's green revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resource. टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया हम लोगों ने, है ना? कि जैसे और साइंटिफिक जो इक्विपमेंट्स हैं, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, वो सब यूज किए, HYV सीड्स, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इतना सारा यूज हुआ और एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, प्रोडक्शन उसका 4 गुना से ऊपर बढ़ा है इंडिया में। India's IT revolution is a striking instance of how importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery. Now, see the example of India's IT revolution. In the IT sector, information technology center, India has become the most progressive country in the world. Right, and a very good result has been seen in the field of IT, information and technology. Lot of people are getting employment, and people of India are very skilled in this field, in the field of information technology. Not only India, but they are serving abroad also. तो 2 एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, एक एग्रीकल्चर का और दूसरा IT सेक्टर का, कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने से, उसमें स्किल डेवलपमेंट करने से कितना बड़ा चेंज आया है। अब यहाँ देखो कुछ क्वेश्चन आंसर्स यही लिखे हुए हैं, देखो, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? इज इट लाइक लैंड और लेबर? नो, इट इज मोर देन लैंड एंड लेबर। ठीक है ना? लैंड और लेबर से भी बढ़ के कौन सा रिसोर्स है? ह्यूमन रिसोर्स है। और तुम्हें भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इज द ह्यूमन रिसोर्स मोर देन लैंड एंड लेबर, तो आपका आंसर यस होगा। Yes, human resources more than land and labor. Land and labor. Much more than land and labor. Much more than. What is human capital? Is it like rupee, pice or dollar? No, it is much more than. हाँ, it is more than that. Human resource जो है रुपी, पाइस और डॉलर से कहीं बढ़ के है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही तो ये सारी चीजों को क्रिएट करता है। Yes, अब एक और पिक्चर देखो, हियर इज ह्यूमन कैपिटल। तरह तरह की ह्यूमन कैपिटल का यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है। दिस पिक्चर इज ऑफ अ डॉक्टर। डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी, है ना? इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक, Yes, ma'am. I have come to know that doctors are very important in our society. For maintaining the good health, the role of doctor is very essential. Then the role of teachers, to make the educated. The role of teachers is also great. Then role of engineers, to create development in the field of technology, and in the industrial sector, etc. The role of engineer is very important. Then here is the role of tailoring, how the person who is doing tailoring work is also very important. India has a very big textile industry in which tailoring is very important. From India, lot of ready-made garments are exported to many countries of the world. ठीक है? तो ये सारे ह्यूमन रिसोर्स का एग्जांपल हम लोग यहाँ देखें कि डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर्स, टेलर्स, ये सब कितने इंपॉर्टेंट है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं।
The people who are engaged in trade and commerce, who are doing banking, insurance, job, etc., and many other scientists. Scientists play a very important role. Looking at the photograph, Yes, ma'am. can you explain how a doctor, teacher, engineer and a tailor are an asset to the economy? ठीक है ना? अब एक डॉक्टर है तो हम हमेशा गुड हेल्थ की बात कर रहे हैं, मेडिकल केयर की बात कर रहे हैं कि अगर ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है तो गुड हेल्थ चाहिए, तो उसके मेंटेनेंस में किसका रोल है? डॉक्टर्स का रोल है। डॉक्टर। और अब इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन जैसे अभी आ गया कोरोना के पीरियड में, तो इस समय तो और भी हमने देखा कि डॉक्टर के ऊपर कितने लोग सब डिपेंडेंट है, सब लोग, है ना? तो जितना भी बीमारी कंट्रोल हुआ वो डॉक्टर के ही रोल से हुआ। फिर टीचर हर लेवल के हैं, प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, सब जगह टीचर्स का रोल है, ठीक है ना? तो पॉपुलेशन को एजुकेट करने में, इंजीनियर, डॉक्टर्स तैयार करने में और भी सर्विसेज के लिए पॉपुलेशन को तैयार करने में टीचर का रोल हो गया। फिर इंजीनियर बहुत बड़ा चेंज लाते हैं, रॉ मटेरियल्स को यूजफुल मटेरियल्स में बदलते हैं, मिनरल्स को मशीन टूल्स में बदलते हैं, तो उसका इम्पोर्टेंट रोल हो गया। टेलर, जैसा कि तुमको हम अभी बताए कि जैसे इंडिया में ना कॉटन बहुत ग्रो होता है, कॉटन का कल्टीवेशन होता है, और इंडिया का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और टेक्सटाइल क्या करते हैं कि पहले उसको स्पिनिंग करते हैं, थ्रेड बनाते हैं, फिर वीविंग करते हैं। वीविंग मतलब क्लॉथ्स तैयार करना, फिर उसकी कलरिंग, प्रिंटिंग ये सब होती है, टेलरिंग होती है, और रेडीमेड क्लॉथ्स जब तैयार हो जाते हैं तो रेडीमेड क्लॉथ्स को हम अपने नेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में भेजते हैं। तो यहाँ टेलर का तो बहुत बड़ा रोल है।